सो नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो आमर ओडिशा जुडिशियल सर्विस सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस है मेन्स एग्जाम रे जदि आपण प्रॉपर आंसर टा लिखुचंती आंसर राइटिंग खाली आंसर राइटिंग आपणकर नॉलेज बेस ऊपर डिपेंड करेनी प्रेजेंटेशन आपण केमती करचंती ता ऊपर भी बहुत डिपेंड करे। तेणु आज जो कोर्स विषय में आपको कहूँ ऑलरेडी एटा क्वाइट पॉपुलर कोर्स स्पेशली जो माने नुआ प्रिपरेशन और सेल्फ प्रिपरेशन करने पे चाहते जो माने इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर करछंती तो मोस्टली से इंस्टीट्यूशंस माने ताको ए जिंसटा प्रोवाइड कर दियंती एटलीस्ट आरोहन रे तमे एटा प्रोवाइड कर दो पिला को कि प्रीवियस ईयर जति कि आपनकर 2012 रु आज पर्यंत जति कि मेंस रो आंसर्स लिखिबार अछि केमिति लिखिबार अछि दैट वी प्रोवाइड। तो आ बहुत पिला भी एटा कहि चंदी ताको पाइला पर इंटरव्यूज करी करे कि एई जिंसटा ही सफिशिएंट थिला तांको एग्जाम क्लियर करिया पे। ओके तो ता विषय रे मु किछु कहबी कोर्स रे कोन अछि आपनकर। सो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थरे कि आपनकर 2012 रु आपनकर सब क्वेश्चंस कवर्ड हिची आज पर्यंत 2012 मेंस रू till date all optionals okay have been covered सब optionals एतरे आपनकर कवर हिची। ओके तापरे न्यू पैटर्न हिसाब रे एटा हिची न्यू पैटर्न माने कोन मु देखेबी आपनको केमती कोन तारो आंसर सरिका अछि। तो आमे बुक्स करिके जदी देखिबा किछि बुक्स भी हम अवेलेबल अछि तांकर जो स्टाइल ऑफ राइटिंग द आंसर ताकू जदी अपन लिखुचंती स्पेशली जो माने परीक्षा खाता देखी ओके जोटा कि एवरी ईयर मते से अपॉर्चुनिटी टा मिले जो पिला माने खाता मगांती से माने तापरे तांको भीतर जो माने आसी डिस्कस करंती मोर काहे मार्क कमी होला गोटे बड़ रीजन हला आपण जदी ताकू पैराग्राफ फॉर्म्स रे गोटे स्टोरी भलिया लिखि दिबे ओके तार इवैल्यूएटर में भी सी एते ताको एप्रिशिएट करिवेनी किंतु आपण जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स फुटी की बाहर थिबो जहा जहा पचारची क्वेश्चन रे अंडरलाइन हेथिबो डायग्राम थिबो केस लॉ टा क्लियरली देखा जाउथिबो केस लॉ देइचंती जदी रिक्वायरमेंट अछि क्वेश्चन रो इलस्ट्रेशन देइथिबे वैल्यू एडिशन पई आपण लीगल मैक्सिम गोटे देइथिबे। ओके तो एई सब जिंस जदी आपण करूचंती ताले आपण ठीक टाइम भीतर आपण आंसर भी सारी परिबे आ प्रॉपर मार्क्स भी पाई परिबे। तो आरो मेजर जदी मु कहिबी कोन कोन एडवांटेजेस अछि तो फर्स्ट हला आंसर जोड़ा रोचे न्यू पैटर्न हिसाब रे रोचे व्हाट इज दिस न्यू पैटर्न मु एबे गोटे कॉपी आपन को आंसर रे देखिबे त आपण जान परिबे। ओके आ जो स्टूडेंट्स माने भी हमर पढी की सेमती आंसर्स लिखि चंती तांकर भी टेलीग्राम रे जो माने रैंक्स पाई चंती टेलीग्राम रे हमें ओपनली तांकर टेस्ट सीरीज रो खाता गुडा देइचु आपण भी देखि परिबे सेथरे हम टेलीग्राम चैनल रे से खाता गुडा अवेलेबल अछि। तो सेही टाइप रो केमती लिखिबार अछि आपण को आंसर ता एथरे डायग्राम हिंट्स भी अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रे जोड़ा कि 15 मार्क ऊपर जो क्वेश्चन है डायग्राम्स केमती करिवे अवश्य आमे सब क्वेश्चंस पे दे देछु सो दैट आपन प्रैक्टिस रहइबो। लीगल मैक्सिम्स एटा कोनोसी बुक रे प्राय मिलेनी बुक रे खाली इंपोर्टेंट आपनकर पार्ट्स रो इंपोर्टेंट सेक्शंस रो रिलेटेड लीगल मैक्सिम्स थिबो किंतु आम मॉडल आंसर से कोन ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे लीगल मैक्सिम्स कोन कोन टोटली रेलेवेंट अछि सेटा दिया हिच। ओके आउ लैंडमार्क केसेस एटा आपन बुक्स रे भी पाई जिवे और रिसेंट केसेस जोड़ा कि जनरली बुक्स रे मिलेनी तापे आपण को किछि यू नो रेलेवेंट करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स सोर्स आपण को पढिया पे पड़िबो। तो ये सब एथरे इंक्लूडेड हुए। कोर्स डिटेल्स जदी कहबा आपण जदी मार्केट रे एंटरकाइना आपणकर टोटली 5टा पेपर आपण को दबार अछि सो एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स रे एटा कवर होए। ओके तो जदी भी आपण सेमती बुक्स हिसाब रे किनचंती आई डोंट थिंक इट विल बी लेस देन 2000 रुपीस टोटल सब पेपर्स पे किंतु आमर ये जो जब कि सब स्टूडेंट्स एटा एक्सेस करि परिबे तो एटा कोर्स फी आरो 500 रुपीस रखा हिची फॉर 1 ईयर। ओके आउ एटा आपण ऐप रे ही परचेस कर परिबे सेल्फ परचेस मोड रे एटा ऐप रे आपण को परचेस करिवार अछि आउ वैलिडिटी आरो रहइबो 12 मंथ्स पर्यंत 1 ईयर वैलिडिटी आपण को रहउछि। ओके 12 मंथ्स रो वैलिडिटी रहउछि। सो दिस इज यू नो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टूल जोटा कि आपण को बहुत ही हेल्प करिवो आपणकर जर्नी रे ओडिशा जुडिशियल सर्विस पे एटा ऐप रे आपण निजे डाउनलोड करिकि ताको करि परिबे एनरोल करि परिबे निजे परचेस करि परिबे नहले जदी किछि इश्यूज अछि आपण लिंक दरकार ऐप रो एंड ऑल
ताले ए नंबर रे आपण कॉल कर दे परिबे 7684054656 किंबा ए नंबर रे आपण व्हाट्सएप भी कर दे परिबे ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मु कहउतली के को टाइप रो हमर एग्जाम रो ये रहउची तो दैट आई विल जस्ट शो यू एटा हला ता पैटर्न ता देखंतु हमर आंसर्स करिका केमती रहउची तो 8 मार्क्स रो क्वेश्चन हला इंट्रोडक्शन देला तार थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स ओके एथरे मेन जिंस हला आपनकर जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स से गुडा आपनको माइंड रे रखिबार अछि लैंडमार्क केस लॉस जा दबार थिला ता विषय दी लाइन लिखला कनेडा 8 मार्क क्वेश्चन लीगल मैक्सिम्स ओके एटा बेसिकली यू नो सबू रे त हम लिख परियन किंतु जे मने रख परिबो ता पई बहुत बड़ वैल्यू एडिशन एटा ओके तापरे तार रेलेवेंट इलस्ट्रेशन और कंक्लूजन एटा 8 मार्क्स पे देछि ऑब्वियसली मु 8 मार्क्स पे आपन को एते बड़ आंसर 8 मार्क्स पे लिखियोबनी दैट इज ट्रू बट आमे एया ट्रीट करछु कि आपन एई पर्टिकुलर क्वेश्चन द एंटायर कांसेप्ट जेंति बुझी पारि जदी एई क्वेश्चन ता बे 15 मार्क की 25 मार्क पे पड़ला एई आंसर ता भी सफिशिएंट हबो ओके सो 5 मार्क्स 8 मार्क्स क्वेश्चन रे आपन को डायग्राम दबार नाही बट वी हैव अज्यूम्ड एटा गोटे आपन को पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स गोटे आपन कहि दे परिबे जो तरी की सबु पार्ट्स तारा जो जा जा क्वेश्चंस पडुची इवन जोडा की आपन को प्रॉब्लम क्वेश्चन जिंदे एई क्वेश्चन स्टार होची ओके फिराक फॉर्मेट रे FIRAC ओके तो सेही फॉर्मेट रे आपन को दिया हेची ओके सो यू कैन गो थ्रू इट तारो आठू नहीं कि अपन निजो नोट्स भी बनेबे एमती नहीं कि अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया ही जेची माने अपन एटा को ही भाबी देबे एटा अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गुटे मन रखबे निजरो नोट्स भी एथरे बनेबार अछि ओके फ्रॉम हियर यू कैन मेक योर ओन नोट्स राइट सो बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन स्टे स्ट्रांग स्टे डेडिकेटेड जदी भी टेम्पोररी सेटबैक्स किछि रहूची आपण सेथरे भांगी पडंतुनी ओके प्रॉपर प्रिपरेशन जहाँ रिक्वायर्ड जेमती आंसर टा लिखिबा ता ऊपर फोकस करंतु निश्चित भाबरे सक्सेस आपन को मिलिबो नमस्कार तो नमस्कार ऑल ऑफ यू सो लास्ट क्लास रे हमें डेफिनेशंस देखुतिलु आज भी से ही देखबा आज गोटे डेफिनेशंस भितरु ही बहुत इंपोर्टेंट गोटे हमें कांसेप्ट देखिया पे जाउछु जोटा हला फैक्ट इन इश्यू हाउ रेलेवेंट फैक्ट्स ओके सेमिति जो माने अगरु पढी चंदी आपण गोटे लाइन रे बुझी जिवे ओके बट नुआ स्टूडेंट्स जो माने अछंती कि तारा कॉन्सेप्चुअली मु आज एंटायर क्लास रे खाली एही गोटे कांसेप्ट ऊपर फोकस करिवे तापरे आपणकर जो लास्ट रे हमें किछटा एक्सरसाइज करिवे जोटा मु ऑलरेडी आपणको ग्रुप रे व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर कर देछि जो माने ओपन यूट्यूब रे देखुचंती आपणको पई टेलीग्राम ग्रुप रे से फाइल टा शेयर हेछि जोथरे हमें लास्ट रे आपण कॉन्सेप्चुअली बुझिचंती कि नहीं ए जो 20 टा ओके सिनेरियो हमें देचु तो सेगुडा हमें देखि कि हमको यू हैव टू आंसर कि आ भितरु फैक्ट इन इश्यू कोटा और रेलेवेंट फैक्ट कोटा ओके सो लेट अस स्टार्ट देन प्रथमे बेयर एक्ट रो प्रोविजन टा टिके देखि दो देन वी विल गो टू दिस पार्ट ओके सो वी हैड कंप्लीटेड in the last class okay till fact okay fact means and includes the following set ame sarthile okay so today we will go to the concept of fact in issue ठीक अछि fact in issue तारी ऊपर हमें जिनसटा देखिबा जोटा कि हमर सेक्शन 3 रे आपण पाउतले इंडियन एविडेंस एक्ट रे so let me go to the बेयर एक्ट फर्स्ट सेटा मु आपण को स्क्रीन रे फर्स्ट प्रेजेंट कर देबी ओके and then we will discuss related to it तो आपण को बेयर एक्ट पाखरे रखंतु बेयर एक्ट आपण बीएसए रो यूज करचंती ओके के जण पचटले मैं इंडियन एविडेंस एक्ट आगु पढिचु तो सेटा कंटिन्यू कर परियो कि नहीं जो नोटिस टा मु
3-4 months आगुरु शेयर करथिली ग्रुप रे सेथरे गवर्नमेंट ओके सेटा ये करथले कोन ना बोथ ओके दीटा जाक सबु हमर जते एग्जाम्स पई दीटा जाक इंडियन एविडेंस एक्ट आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम दीटा जाक आपनकर एप्लीकेबल हबो ता माने कोन से माने बोले सेक्शन जदी पकेबे दीटा जाक पकेबे आउ मोस्ट क्वेश्चंस रे मे बी आपनकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देबे धरंतु आपनकर गोटे पर्टिकुलर रेस जेस्टा ऊपर आपनकर क्वेश्चन पड़ला ठीक अछि तो एबे जे जाकू इंडियन एविडेंस एक्ट रो कोट करियर अछि आपण कोट कर परिबो ठीक अछि जाकू बीएसए रो कोट करियर अछि आपण सेटा कोट कर परिबो ते सेमती बेसिकली करिवो ओके आउ जो प्री रे भी ओके तो प्रथम थर तो प्री होबो जो थरे की आपनकर सेटा इंप्लीमेंट्स माने करिवे तो देखिया पड़ियो हमको ओके व्हाट बेसिकली दैट मींस ओके सो मते जा लागुची व्हाट दे विल डू इज से माने जदी पकाउछंती भी गोटे पर्टिकुलर सेक्शन ताले से माने या करिवे कि बोथ पकेबे ओके दिस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्लैश दिस ऑफ बीएसए एमती से माने पके परन ठीक अछि सो आज एंटायर क्लास रे हमें जा डिस्कस करिबा दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस ओके डेफिनेशन से हमें अछुबे दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फैक्ट्स एंड इशू हला तो जनरली जदि आमे बुझिबा फैक्ट्स एंड इशू कोन आपण ताको प्रिंसिपल फैक्ट कहि परिबे सेंट्रल फैक्ट कहि परिबे जोटा कि जहां भी हेले आपण को ओके प्रूफ करिया पे पड़िबो कोर्ट सामने रे केसटा जीतिया पे ठीक अछि तो बेयर एक्ट रे कोन डेफिनेशन देछि देखंतु फैक्ट एंड इशू मींस एंड इंक्लूड्स ओके तो ए जो मींस और इंक्लूड्स माने कोन ना तार स्कोप टाको आउ वाइड कर देला ठीक अछि तार स्कोप टाको डेफिनेशन रो आउ वाइड कर देला एनी फैक्ट फ्रॉम व्हिच ईदर बाय इटसेल्फ माने से फैक्ट ही देखि दोची और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स ओके द फैक्ट इन इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स माने से फैक्ट डायरेक्टली गोटे जिंस देखौची किंबा कनेक्टेड ता संगे जोटा कोलेटरल ओके ता संगे जो फैक्ट्स जोड़ा लागिची द एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी एही तीनटा वर्डटा अंडरलाइन करंतु जोटी भी लिखिबे एही तीनटा वर्ड हमको इंक्लूड करिवार अछि राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows okay explanation record deji whenever under the provisions of law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of fact the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is fact in issue okay which basically means that जो fact okay गोटे राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी असर्ट करूची कि डिनाय करूची ठीक अछि कि मैं असर्ट करूची डिनाय करूची कोन त माने देखंतु फॉर एग्जांपल मु जणको एक्यूज करूची ए लोक मो जिंस चोरैछि ओके चोरी करके नैछि तो मु सेटा कोन ना किछिटा असर्शन करूची ओके आई एम असर्टिंग some kind of criminal okay action done by him आउ भी गोटे ही परिबो तो एटा से करिछि ओके सपोज तारो मोर गोटे कॉन्ट्रैक्ट हेतिला ठीक अछि से मोर घर करिवार थिला एतिके एडवांस मु दाउ दे दिथिली एक्सक्यूज मी ओके सो बट से कलन ठीक अछि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कला कि जबि से कलानी सेटा घरटा कलानी पैसा किंतु नै राइट तो सेठी मु कोन कहूची ना ये जिंसटा कलानी okay so something is being asserted or being denied okay तो जो जिनसोटा assert होची कि deny होची basically that is fact in issue second part रे जोटा explanation रो कहूची simple terms और ताको गोटे लाइन रे कहले जोटा प्रिंसिपल फैक्ट ता जोटा को प्रूफ करी कि आपण केसटा जीतिबे सीधा साधा भाषा रे कहले सेटा हला fact in issue ओके तार सब अलग अलग ना भी अछि जोटा हमें देखिबा ओके बट लेट अस फिनिश द बेयर एक्ट फर्स्ट और इलस्ट्रेशन देला ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी फैक्ट इन इशू ओके
तो एटी कौन एटी प्रोसिक्यूशन को कौन प्रूफ करिया पड़िबो एया कि ए मर्डर करछि ओके बी रो राइट दैट ए कॉज्ड बी's डेथ सेटा फैक्ट इन इशू दैट he intended to cause बी's डेथ तार मोटिव से थिला तार इंटेंशन से थिला that A had received grave and sudden provocation from B. Okay. And that A at the time of doing this act, which caused B's death, was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature. जहाँ भी उड़ा हला ये सबू ओके फैक्ट्स इन इश्यू रो एग्जांपल देला कहीं ना एई गुड़ा अपनो बेसिकली दीज आर सेंट्रल और द प्रिंसिपल फैक्ट्स व्हिच आर सेंट्रल टू डिटरमिनेशन ऑफ द केस ओके तो एटा हला आपनकर जनरल जहाँ आपनकर देछि बेयर एक्ट रे तार कॉन्सेप्चुअली बुझिबा पई ओके वी विल टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओके तो एटा हला फैक्ट इन इश्यू तापरे जदि हमें इफ वी कंटिन्यू विथ दिस नेक्स्ट कौन जिनसटा हमें देखिबा ओके नॉट अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट तो रेलेवेंट फैक्ट आपण देखिबा तो जो फैक्ट इन इश्यू टाकू आपण कोर्ट सामने रे प्रूफ केमति करिवे किछि एविडेंस करिका ओके आपण देबे ता पे राइट सो दोस आर बेसिकली योर relevant facts which will help you prove your fact in issue okay एटा हला बेसिक कांसेप्ट तापर त हमें डिस्कस करबा आरो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आरो डिफरेंसेस कोन एटा पढिछि बहुत तरह एग्जाम रे डिफरेंसेस ठीक अछि आउ तार लैटिन टर्म्स करिका जोटा असाइनमेंट रे दिया हिच आपण ओके सो दोस पार्ट्स वी विल स्टडी so let us continue then concept आगे बुझिबा गोटे जनरल डेफिनेशन देखिबा ओके फैक्ट इन इश्यू कोन रेलेवेंट फैक्ट कोन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आउ दीटा को जानला परे ताको भीतर डिफरेंसेस कोन आउ तापरे एक्सरसाइज टा आज करबा ठीक अछि कॉन्सेप्चुअली जो माने एक्चुअली जानी चंती कांसेप्ट टा जेमति मु कहली गोटे लाइन रे आपण एक्सप्लेन कर दे परिबे जे ऑलरेडी पढी चंती ताले बिकॉज इट विल बी ए काइंड ऑफ फंडामेंटल टाइप रो क्लास टुडे जो माने प्रथम थर पे एटा पढुचंती तांको मे बी टिके इंटरेस्टिंग लागि पारे से माने किछडा सिखि पारे ऑलरेडी जो माने जानी चंती it is your discretion you can skip it okay skip the class कहीं ना आज मु से बेसिक जिंस कहीं एटा गोटे बहुत ही फंडामेंटल जिंस ठीक अछि एटा को न जानले आउ मु जदी डिफरेंशिएट करि पाउनी कोटा फैक्ट इन इश्यू कोटा रेलेवेंट फैक्ट ताले मते सेटा आगु को जाई कि प्रॉब्लम हो so entire class today I'll be focusing on this part only okay so notes टा ready करंतु you will have to write certain things okay कहीं ना जेते फंडामेंटल जिंस तार टिके लेखिया भी पड़िबो ठीक अछि so let us start with a general definition what do you mean by fact in issue okay so please take down definition a definition टा academic definition मु जा definition generally देबी एगुड़ा सब वर्किंग डेफिनेशन माने ताको फंक्शनल डेफिनेशन भी कहते जोटा कि आमे हम मनरु करछु तार प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शनैलिटी को देखि ओके सो ओके लेट मी रीड फैक्टम प्रोपेंडा में कहछु फैक्ट्स इन इश्यू ठीक है तो फर्स्ट तार डेफिनेशन टा लेखम वर्किंग डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आपण कहि पारे जोतरे आपण मन में बेसी किछि रखिबार नै एटा जनरल जिंसटा आपण लिखि परिबे ओके सो प्लीज टेक डाउन a fact in issue
ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ କହିଥିଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ अंडरलाइन କରିବେ ସେ ତିନିଟା वर्ड रखिया पे पड़िबो हैला जोडा हैला लायबिलिटी ओके डिसेबिलिटी ठीक अछि से जो तीनटा वर्ड हमें देखिथिलु पेयर एक्ट रे इन द प्रीवियस स्लाइड व्हिच आई हैड टोल्ड यू राइट लायबिलिटी और डिसेबिलिटी ए तीनटा वर्ड जा बेले आपनकर वर्किंग डेफिनेशन रे रहबा कथा और एटलीस्ट से कांसेप्ट आपनकर सेथरे आसीबा कथा सो टेक डाउन ए फैक्ट इन इश्यू refers to a fact that is directly in dispute refers to a fact that is directly in dispute directly in dispute okay that is directly in dispute between the parties involved in a legal proceeding between the parties involved in a legal proceeding ओके जोड़ा हम कहितलो सेटा हला प्रिंसिपल फैक्ट ताको प्रिंसिपल फैक्ट भी कहू जोटा कि आपण प्रूफ कले ओके किंबा जोटा को एस्टैब्लिश कले आपण केस टा जितिबे तो कंटिन्यू इट इज ए प्रिंसिपल फैक्ट ताको अंडरलाइन करंतु प्रिंसिपल फैक्ट इट इज ए प्रिंसिपल फैक्ट okay it is a principal fact that the court must determine to resolve the case it is a principal fact that the court must determine to resolve the case thus तो जदि 10 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला कि 15 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला मु ए 3 लाइन लिखिबी 5 मार्क रो क्वेश्चन पड़ची ताले जो नोट्स डका होची कि नोट्स आपन को मिलुची सेथे देखिबे सब जिंस लेखाले पर देयर फॉर दस करी कि से गोटे लाइन रे समराइज करथिबो ए जो 5 मार्क क्वेश्चन पड़िबो लिखिया पे फैक्ट इन इश्यू कोन आपन एते लंबा तो लिखि परिबेनी इंट्रोडक्शन टा तो गोटे लाइन लिखिबे तो एटा हैला गोटे लाइन देयर फॉर दस इन समरी ओके एटा हैला तारो समरी करिका so thus comma facts in issue are the core components underline karibe core components facts in issue are the core components facts in issue are the core components that establish the rights and liabilities of the parties that establish the rights and liabilities of the parties rights and liabilities of parties एटा गोटे जनरल डेफिनेशन ठीक अछि जदि 10 मार्क 15 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला ओके आ आपन को डेफिनेशन दबार अछि 3 लाइन लिख परिबे जदि 5 मार्क किंबा इवन ओएसजेएस करिकारे एडीजे परीक्षा रे 2 मार्क क्वेश्चन भी पड़े ताले लास्ट लाइन टा केवल लेखा हबो हला आ सब जो नोट्स मु डाकिबी सेथरे सेम जिंसटा रहइबो आपन गोटे जिंस लिखुचंती ता लास्ट लाइन टा जोटा सेटा समराइज करथिबो तो लेखा हितिबो देयरफॉर हेंस ओके एसेंशियली इन समरी ता माने जदि समयर अभाव अछि आ गोटे लाइन लिखिबार अछि केवल से लाइन टा लेखा हबो
ऊपर जा लिखा है सेटा आपन बुझिया तो एठी जदी से मु जस्ट खाली एतिक लिखिबी facts in issues are the core components that establish the right and liabilities of the parties सरला ओके 5 मार्क क्वेश्चन जदी पचरा हिच राइट नाउ let us come to the characteristics जो facts in issue हमें कहूछु तेरे कंटिन्यू करन तो नेक्स्ट पैराग्राफ है गोड दिटा को तार अलगा किछटा ना आउ से गोडा हमें देखि दबा वैल्यू एडिशन जोडा हमें कहूछु ओके सो टेक डाउन a fact in issue is called principal fact or factum probandum a fact in issue is called the principal fact or factum probandum okay right now come to the characteristics the next heading दियंतु characteristics of facts in issue if अपना features कोई परिबे जब characteristics facts in issue let me short करी हूँ FIR लिख दीजिए okay so characteristics of facts in issue so we'll see some characteristics basic characteristics जोड़े fact in issue रो कौन कौन अपना करो characteristics होची okay so first लिखंतु number 1 obviously हमें देखो principal fact कहूचु माने it is central to the adjudication of the issue so number 1 हैला central to dispute से dispute resolve करिया पई judicially ताको adjudicate करिया पई एई एटा गोटे central fact गोटे principal fact okay so central to the dispute means if you solve this mostly आपनकर okay case टा solve हो right सेटा बुझी पाउचंदी but still then for the notes just take down one line they form the माने facts in issue form the crux crux main point center okay they form the crux crux of the legal controversy and are essential for the court's decision okay and are essential for the court's decision ठीक है एटा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कौन तो these facts and issues are determined by substantive law so second point determined by substantive law okay determined by substantive law तो तारा वन लाइन लिखी दियोन से तेरे okay the identification of facts in issue FIH लिखंतु जल्दी जल्दी अपन लिख परिबे the identification of facts in issue depends on the applicable substantive law the identification of facts in issue depends on the applicable substantive law governing the case okay এটা সেকেন্ড পয়েন্ট আচ্ছা আমি তাকু গোটে প্রিন্সিপাল ইস্যু কি সেন্ট্রাল ইস্যু কোন পাই कहूछु
कहीं ना it directly affects the outcome of the case. Okay, case रो adjudication ପାଇଁ सेही problem टा solve हुआ निहाती दरकार. So it directly affects the outcome of the case. एटा हला आपका third point. So third point take down, directly affects outcome. Directly affects outcome. Okay. So इतरे गोटे line लिखी दियंतु. The court's findings on these facts. The court's findings on these facts directly influence the judgment rendered. Directly influence the judgment rendered. RENDERED. Okay. ठीक. अच्छा जो facts in issue ताको आपण proof की disprove केमती करिवे through some kind of proof. Okay. So it requires proof to be established or to refute the fact in issue. Okay. So next point lekhantu requires proof. Requires proof. Parties must present evidence to establish or refute these facts. Parties must present evidence to establish or refute these facts. Establish or refute को underline कर देवे. Parties must present evidence to establish or refute these facts. Okay. अच्छा तापर हमें जदि देखिबा different cases रे facts करिका. So सबु केस पई कोन same facts applicable होबो ना. Okay. Different case रे आपनकर facts different अछि. Okay. So accordingly एगुड़ा specific to the case. The next point लिखंतु specific to each case. हमें एथर basically fundamental characteristics of facts in issue सेटा देखुछ. Okay. So next point take down specific to each case. Specific to each case. Okay. So एथर गोटे लाइन लिख दियंतु FIIs हला FII ने fact in issue हमें कहूछु. Okay. और ताको economic sense रे foreign institutional investor बोली भाबिबेनी. ठीक अछि काना FII जनरली कहले जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करछन्ती से एआई भाबिबे कि ओके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर राइट की इन्वेस्टमेंट जाबियो. So facts in issue vary based on the unique circumstances. Facts in issue vary based on unique circumstances and legal questions of each case. Facts in issue vary based on unique circumstances and legal questions of each case. Then सब case by facts in issue will be different. Okay. So यही facts उड़ा ताको evaluate किए करिवो ताको determine किए करिवो कि ए facts उड़ा actually आपनकर ठीक अछि कि नहीं. Court will do that. That means the facts in issue are subject to judicial determination. Okay. So next point है subject to judicial determination. Subject to judicial determination. ठीक है गोटे लाइन लिखन तो
The court evaluates and decides upon these facts. The court evaluates and decides upon these facts based on evidence presented. Based on evidence presented. Okay. तापरे कोर्ट रे जो between the parties, okay, जो arguments हरिका हबो, जो stands से माने नेबे, सेटा एई facts इन issue ऊपर ही से माने नियम कि जने कहूची कि ये लोक मोर ये चोरी कर दे, चार लोक ना आगे मु चोरी कर, ये आरो केस टाको प्रूफ करे पे जहाँ जहाँ से तारो एविडेंस हरिका दबो, से ता केस टाको प्रूफ करे पे जहाँ जहाँ एविडेंस दबो. ता माने कौन जो लीगल आर्गुमेंट अपन को एंटायर केस रे हबो, सेटा बेसिकली बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इन इशू. Okay, so next point लिखो, foundation for legal arguments. Foundation for legal arguments. Foundation for legal argument. तो parties जहाँ argue करिवे से case से, सेटा basically ए facts in issue पर ही समने argue करन. Okay, so take down. They serve as the basis for the legal arguments. They serve as the basis for the legal arguments. They serve as the basis for the legal arguments and strategies employed by the parties. They serve as the basis for legal arguments and strategies employed by the parties. And strategies employed by the parties. Okay. Tapare, next point lekhonto. They influence legal rights and obligations. Okay. तो ये जो हमें फर्स्ट जोड़ा देखिलु कि जो लीगल राइट्स अछि, ऑब्लिगेशंस अछि, डिसेबिलिटीज अछि, ओके, एगुडा सब आपनकर based on these facts in issue. So they influence legal rights and obligations. Next point. जदि अल्प वैल्यू रो क्वेश्चन पडुची 5 मार्क रो, को केस रे 2 मार्क रो, ओके, ओजेएस हम 2 मार्क क्वेश्चन पड़ेनी, बट अदर एग्जाम्स तो सेतरे आपण आउ जो वन लाइन मो डिस्क्रिप्शन दउची सेडा दरकार नै, एति खाली सीधा पॉइंट लिखि कि आसिले. ओके, तो डिस्क्रिप्शन करिका जोटी समय थिबो, ओके, आउ जोटी सेति मार्क्स थिबो 10 मार्क 15 मार्क सेमति. ओके, सो टेक डाउन डिसिशंस on these facts. Decisions on these facts. Decisions on these facts determine the legal rights and obligations. Decisions on these facts determine the legal rights and obligations of the parties involved. Determine the legal rights and obligations of the parties involved. ठीक है. तो को स्टेज रे आपण फैक्ट्स इन इश्यू गुडा ओके आइडेंटिफाई करछथि. Generally starting stage रे सेटा मु करिया पड़िबो प्लीडिंग स्टेज. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग प्लीडिंग्स. Identified during pleadings.
Okay, identified during pleadings. So take down. Fact in issue are typically outlined. Facts in issue are typically outlined during the pleading stage of the legal process. Fact in issue, facts in issue are typically outlined during the pleading stage of the legal process. Okay. Our last point टा सेटा already हमें discuss करिछु जेहेतु ताकु गोटे because तार importance टा एते रोची facts in issue रो सेत पई हमें कहि परिबा एटा गोटे redundancy रोची ता माने हमें already ये point टा आगुरु लेखिछु in a different form but again आउ थरे एटा लेखुछु in another different form. Okay, तो last point टा लेखंतु essential for case resolution. Essential for case resolution. Essential for case resolution. Okay, one line tara explanation likhi diyantu. A clear determination of these facts, a clear determination of these facts a clear determination of these facts is crucial for the final resolution of the dispute. Is crucial for the final resolution of the dispute. Okay, so this is your facts in issue, some characteristics of facts in issue. तापर हमें किसी examples नहीं कि सेटा देखिबा, then you will understand fact in issue. Okay, गरिका कौन, right? So take 2 minutes. I'll just switch off the mic and the camera. You just take 2 minutes. जहाँ लिखी चंदी ताको थोड़े पढ़ंतु first. Okay, and keep your doubts with you. After 2 minutes, you ask your doubts. आ भितरे कौन doubt टा अछि. Then we will move on to relevant facts. Relevant facts कौन? Okay, सेटा में देखिबा. तारो characteristics कौन सेटा में देखिबा. Then we'll go to the difference between the two. Okay, so that is the agenda for the remaining part of the class. So please take 2 minutes and go through what you have written. जिते सिंपल लैंग्वेज रे परियो मु ट्राई करछि रे करिया पे. ओके, आउ आपण एग्जाम रे भी मन रखिबे जिते सिंपल इंग्लिश रे लिखिबे मार्क्स सेते अधिक आसीबो. जिते आपण ऑर्नामेंटेशन यूज करिवे कि पूरा हार्ड लीगल लैंग्वेज जि बेयर एक्ट रे लिखाबे सेमति लिखिबे ताले मे बी आपणकर मार्क्स टा ओके सेते अधिक न आसी पारे. वेर यू हैव टू कोट द बेयर एक्ट सेटा अलग कथा. ओके, जोटी आपण बेयर एक्ट को कोट करछथि किंतु हमको लिखिबार कोन अछि बेयर एक्ट रो जो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स सेगुडा रहिथिबो किंतु एक्सप्लेनेशन टा निजो लैंग्वेज रे थिबो ताले आपण को घोषिया पे बेसी जिंस भी पड़िबोनी आपण इजीली लॉजिकली मने भी रखि परिबे जिंसटा. ओके, सो प्लीज गो थ्रू इट.
Done? Any doubts? Then please ask. Else we'll go to relevant facts. Okay, so next ଆମେ ଆସିବା relevant facts କୁ। ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଯଦି simply ଆପଣ ବୁଝିବେ ତ facts in issue କୁ ଆପଣ proof କେମିତି କରିବେ? ଓକେ, ଯାହା ଭରସାରେ ଆପଣ proof କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ relevant facts କହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, simple ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, then we'll go to the details. ଓକେ, ତାର ବି characteristic କଣ ଅଛି, ତାର ବି working definition କଣ ଅଛି। ଓକେ, that is basically which we will see now. ତ definition ତାର ଲେଖନ୍ତୁ। So first take down, relevant facts are those relevant facts are those that, comma, relevant facts are those that, comma, while not directly in dispute, comma, while not directly in dispute, not directly in dispute, comma, while not directly in dispute, comma, have a logical connection, have a logical connection to the facts in issue, have a logical connection to the facts in issue. ठीक है, कंटिन्यू। तो ताको काम कौन बेसिकली, ओके, दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, support or clarification. They provide context, support or clarification. They provide context, support or clarification, comma, aiding the court in understanding, aiding the court, helping the court, okay, aiding the court in understanding, in understanding the facts in issue more comprehensively, in understanding the facts in issue more comprehensively, aiding the court in understanding the facts in issue more comprehensively. Okay,
सो एटा हला जनरल आपण relevant facts. Okay, so let's say हमें facts in issue करबा whether Mr. A has committed a murder. Okay, the relevant facts कौन होता है तो हे परिबो कि on the night of murder Mr. A was within तार phone रो coordinates की location position was within 1 kilometer radius of the crime scene. ठीक अछि, relevant fact हबो. ठीक अछि, सेटा dispute रे न होई पारे डायरेक्टली से एबे मे बी से सेठी को दुकान पाखरे सेठी गोटे थिले. ठीक अछि, सो नॉट डायरेक्टली इन डिस्प्यूट. तो ही वाज देयर से भी निजे भी एडमिट कर दे पारे हम मो सेठी होटल रे खाउतली सेठू 500 मीटर भीतर मर्डरटा हिच. ओके, सो नॉट डायरेक्टली मे नॉट बी डायरेक्टली ओके इन द डिस्प्यूट. ओके, सो there direct connection nahi to the question in dispute that whether he has committed the murder or not. Okay, but it is going to help, okay, in adjudicating, in establishing whether the fact in issue, okay, ताको आपण proof करूचंती. Okay, किंबा ताको disprove करचन जा भी it will help in bringing, okay, finality to the case, right? So it is also called जेमति हमें एटा देखिलु. Okay, ताको आपण कहले कोन ना factum probandum. ठीक सेही टाइप रे आको आपण कहउचंती factum probans. ओके, आउ जेमति आपण देखो प्रिंसिपल फैक्ट कहउतले फैक्ट इन इश्यू को आको हमें कहउचु एविडेंशियरी फैक्ट. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु. इट इज आल्सो नोन एज एविडेंशियरी फैक्ट और factum probans. It is also known as evidentiary fact or factum probans. Okay, बुझिपाले. Now let us go to the characteristics. Are characteristics कौन? Okay, so heading लिखंतु characteristics of characteristics of relevant facts. तो प्रथमे तो दी तीनटा जिंस हमें डायरेक्टली जा हमें वर्किंग डेफिनेशन रु पाई जाउछु कोन ना एटा डायरेक्ट न होई पारे एटा जनरली तार ना जेमते हम देखले इट इज आर एविडेंशियरी फैक्ट. सो तांकर मेन काम हैला एविडेंशियरी सपोर्ट. ओके, तो सेटा आपण सपोर्ट की रिफ्यूट करि परिबे फैक्ट्स इन इश्यू को तांकर प्राइमरी काम से. सो टेक डाउन द हेडिंग एविडेंशियरी सपोर्ट. Evidentiary support, right? So let us see that evidentiary support ray. Okay, so basically you can take down one line. They serve to support or refute the FII, facts in issue. They serve to support or refute. They serve to support. Okay, माने positively सेटा हाँ एटा हेची तार proof तो होचंदी or refute ना एटा हेनी. Okay, they serve to support or refute REFUT the facts in issue. जैसे हमें लीगल लैंग्वेज लिखुचु स्पेलिंग मिस्टेक टिके एपट सेपट हेले इट इज ओके, बट चेष्टा करंतु सिंपल इंग्लिश रे लिखिया पई आउ जेमति स्पेलिंग मिस्टेक हबनी. काहे ना एगुडा तो ऑब्वियसली आपनका लीगल जो माने एक्सपर्ट से माने ही देखिबे, राइट? बट स्टिल देन केते जण एंति भी थांती जो को बेसी स्पेलिंग मिस्टेक्स हेले ऑल्दो आपण लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ता ठीक अछि तने किछि मार्क्स माइनस कर दे परिबे. तो ताकू सेमति एमति न हो ताकू देखिया पे हमें जते सिंपल इंग्लिश रे लिखिया पे चेष्टा करियो. ओके, तापरे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखंतु लॉजिकल कनेक्शन. तो फैक्ट इन इश्यू, ओके,
सो ता संगे किछि तार लॉजिकल कनेक्शन रहिबा दरकार ओके रैशनल रिलेशनशिप रहिबा दरकार ठीक अछि तो सेकंड पॉइंट लिखंतु लॉजिकल कनेक्शन तो टेक डाउन there exists a rational relationship सेटा अंडरलाइन करिवे rational relationship there exists a rational relationship between relevant facts and the facts in issue between relevant facts and the facts in issue ठीक है जी तो लॉजिकल कनेक्शन और रैशनल रिलेशनशिप रहिबार अछि तार ओके फैक्ट इन इश्यू सहित थर्ड पॉइंट लिखंतु तांगर काम कोन दैट दे असिस्ट ओके इन इन्फरिंग what are the you know circumstances or various inferences regarding the fact in issue so number 3 assist in inference assist in inference okay so take one line on this point they help the court draw inferences regarding the facts in issue they help the court draw inferences they help the court draw inferences regarding the facts in issue okay तापर नेक्स्ट जोटा हमें फर्स्ट रे तार वर्किंग डेफिनेशन रे देखथिलु एटा इनडायरेक्ट ओके डायरेक्टली एटा फैक्ट इन इश्यू ओके जोटा कि फैक्ट इन इश्यू आपण कहले एटा सेंट्रल और डायरेक्ट फैक्ट एटा खाली असिस्ट करूची इन्फरेंस ओके सो एगुडा सपोर्टिव एविडेंस ठीक अछि सेंट्रल नो एटा सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन टेक डाउन नॉट सेंट्रल बट सपोर्टिव not central but supportive not central but supportive okay so one line ta upar likhantu while not the main point of dispute comma while not the main point of dispute comma they provide necessary background and context while not the main point of dispute comma they provide necessary background and context they provide necessary background and context मु स्लो डिक्टेशन करछि सो दैट यू नो पीपल कैन यू नो जो टिके एते बेसी फास्ट भी नथिबे आपण को लिखे आस्ते आस्ते लाइव डिक्टेशन जदि आपण नेबे तो आपण को राइटिंग स्पीड बढ़ियो आपण यदि ओजेएस में प्रिपेयर करछनी आगुरु कहिछि जेतु सेटा हमर मेन एम आपण को राइटिंग प्रैक्टिस तो एटा मन रखिबे आपण को राइटिंग स्पीड केते होबा कथा ठीक अछि यू कैलकुलेट इट योरसेल्फ इट शुड बी 20 to 25 वर्ड्स पर मिनिट हैला आपण को स्पीड एबे केते अछि सेटा आपण देखि देबे ता माने नो कि 2 मिनिट रे केते लिखि देखिबे नाही गोटे सस्टेन्ड पीरियड पर्यंत आपण केते लिखि पाउछंती तार बेस्ट जिंस हैला आपण जो सब्जेक्ट आपण को सबटु भल लागु सपोज प्रोसीजरल लॉ हैला कि आपण हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ हैला आपण जोडा भल लागु क्राइम्स एंड टॉर्ट हैला ज्यूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन हैला कॉन्ट्रैक्ट हैला तार गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धरंतु ता मॉडल आंसर धरंतु जोडा कि ऑलरेडी आपण को 2023 पर्यंत अपलोडेड अछि थरे पढ़ी दियंतु मॉडल आंसर आपण जानि गले कोन केमति लिखियार अछि पूरा 3 घंटा बसंतु 3 आवर्स लिखंतु आपण ता परे आपण देखिबे कि 3 घंटा रे एक्चुअली मु केते लिखि परली
already you know the questions, already you know the model answers ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ମୋ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ ଟା କେତେ ଓକେ over a sustained period of time जोटा कि एग्जाम 3 घंटा रहुଛି तो ଆମେ 3 घंटा देखिबा इनिशियली हमर ओके जनरली कोन हुए ना इट इज लाइक दिस ओके बेल कर्व टाइप रो थाए ओके बेल कर्व माने कोन ना आपनकर इनिशियल जतरे स्टार्ट हबो आपन टिके ना एते जल्दी लिखि परिबेन तापर मझिरे पिक करिवे ठीक अछि 1.5 to 2.5 hours भितरे मैक्सिमम स्पीड रे अपन लिखिबे आ तापर सेटा खसे ठीक अछि लास्ट 15-20 मिनिट आपण जोर जोर लिखुथिबे ओके स्क्रिबल करिकि बट ताकू जदी देखिबे वर्ड्स पर मिनिट रे ताले एटा ए टाइप रो आसो ओके हमकु कोन करियार अछि आइडियल जिंस हला एटा एमिति रहबा कथा किंतु एमिति रही पारेनी ता माने कोन मु स्टार्टिंग रु ही पूरा बढ़िया स्पीड रे लिखिबी आ सेटा सस्टेन करबी पूरा मोर परीक्षा सरला पर्यंत 3 घंटा सेटा जनरली हुएनी सेटा गोटे आइडियल सिचुएशन बट नॉट द रियल और प्रैक्टिकल सिचुएशन सेटा हुए बट एनीवे से मिसे की एवरेज रे 20 रु 25 वर्ड जदी न लिखि परचंदी स्पेशली प्रोसीजरल आउ किछिटी ऑप्शनल रो पेपर सारिबा कष्ट होई जिवो ओके इंग्लिश छडा बाकी सब आपनकर प्रॉब्लम रे पड़ी जिवे इंग्लिश ता आपण अधघंटा भी जदी सोई पड़िबे क्लासरूम माने एग्जाम हॉल रे किछि आपनको असुविधा होबनी ओके काहे कि ना 150 मिनिट्स 150 वर्ड्स ठीक अछि 150 मार्क्स ताले गोटे मार्क पई गोटे मिनिट तापर पुनी सेतरे लेंथ ऑफ द आंसर टा आपनको दिया ही जेथिबो ठीक अछि एठी तो किछि कहउनी एठी पिला 5 मार्क पई भी 2 पेज लिखुछंती 25 मार्क पई 10 पेज लिख देउथिबे ठीक अछि जा भी हो एठी किछि सेमते नाही कि 100 वर्ड भीतर लेख 400 वर्ड भीतर लेखंती सिविल सर्विस रे क्लियरली दउछ एठी सेमते किछि नाही आपण लिख परियो जते लिखिया कथा राइट बट इंग्लिश रे एसे रे लिमिट अछि शॉर्ट पैसेज लिखंतु 150 वर्ड रे 50 मार्क रो क्वेश्चन दउछ 50 मिनिट मिलुची 150 वर्ड लिखिया पई तार मु गोटे ब्लू प्रिंट भी करिवि सब जिंस भाबी कि भी नॉट मोर देन 15 मिनिट्स जदी आपण प्रैक्टिस करछन तो 35 मिनिट सीधा सेव हे गला मोर सेठी ओके तापर आसंतु प्रेसी ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन कॉम्प्रिहेंशन सब गुड़ा 25-25 मार्क प्रेसी कोन आपण 25 मिनिट पे लिखिबे जे ठीक रे प्रैक्टिस करिकि जाइथिबो से प्रेसी 10 to 15 मिनिट से सार दबो इंक्लूडिंग द ड्राफ्ट प्रेसी ठीक अछि फॉर एग्जांपल काली जो माने लाइव लिखिकि पठौतिले प्रेसी क्लास रे मु आपन 15 मिनिट दउतिली आपण 3 मिनिट आगुर पठै दउतिले ठीक अछि ड्राफ्ट लिखिकि भी ओके सो जस्ट इमेजिन ओके सो यू गेट लॉट ऑफ टाइम इन इंग्लिश तेणु जेते टाइम एते मिलुची इंग्लिश रे सबले चेष्टा करिवे 100 प्लस रखिया पे ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन 25 मिनिट्स एते दरकार नहीं आपण जंती रूल्स गुड़ा इट इज कंप्लीटली रूल बेस्ड ठीक अछि तो दैट इज एसवीओ आउ एसओवी को केमिति आपनकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लैंग्वेज रु सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लैंग्वेज को केमिति चेंज करिवे किछिटा चेन रूल्स अछि से रूल्स गुड़ा जानले बस आपण धड़ाधड़ सेडा कर दे पारे एनीवे जा भी हो हम कहया कथा हला लॉ पेपर्स पई एतिकी स्पीड मेंटेन करिवे एबे न थाई पारे अपन मु एबे प्रिपरेशन स्टार्ट करिछि 5 दिन हला ठीक अछि ताले मोर कोन 20 to 25 वर्ड्स पर मिनिट हे जिवो हबनी समय लागिवो बट फॉर दैट टू इवॉल्व एज ए गुड ओके आंसर आपनकर आंसर राइटिंग स्किल टाकू इवॉल्व करिवा पई आपनको टिके समय देवा पई पड़िबो एटलीस्ट तो दिन को दुटा आंसर अपन लिखिबे जा भी पढ़ले ओके तो कम लेट अस कम बैक सो इट इज नॉट सेंट्रल बट सपोर्टिव सेठी गोटे लाइन आपण लिखि दियंतु while not the main point of dispute comma while not the main point of dispute comma they provide necessary background and context they provide necessary background and context okay तापरे नेक्स्ट पॉइंट को आसंतु whether a fact is a relevant fact एटा के डिसाइड करियो ऑब्वियसली कोर्ट डिसाइड करियो कोर्ट केमति डिसाइड करिवे एविडेंस रूल्स रु डिसाइड करिवे जहा बेसिक रूल्स ऑफ एविडेंस अछि तो नेक्स्ट पॉइंट डिटरमाइंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस
determined by rules of evidence. Gote line lekhanta upare, determined by rules of evidence. Their admissibility is governed. Their admissibility is governed by the rules outlined in evidence law. Their admissibility is governed by the rules outlined in evidence law. Okay, so এটা relevant fact ki nahi seta court decide karibe, court kemti decide karibe, evidence ro rules ଅଛି, okay, ତାକୁ follow କରିକି ଅବଶ୍ୟ court କର discretion ବି ଅଛି, okay, कि for the overall cause of justice ଯଦି से रूल टू टिके बाहरी की भी जीवा पई पड़े आ गोटे एविडेंस जोटा अकॉर्डिंग टू दोस रूल्स ऑफ एविडेंस एडमिसिबल हबा कथा नुह, ओके, सेटा को भी एडमिट करा जाय परियो जदी कोर्ट या भाबिबे कि दिस विल सर्व द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. ठीक अछि, सेति पई everything or most of the things are, okay, under the discretionary power of the court, right? तापरे next एटा भी जहाँ देखिथिलु आमा facts in issue एटा सब case specific, right? So variable significance. Next point, variable significance. तो एथरे गोटे पॉइंट लिखंतु, the importance of relevant facts, the importance of relevant facts can vary depending on the case specifics. The importance of relevant facts can vary depending on case specifics. Okay, next point तापर लिखंतु, can be circumstantial. तो इधर circumstantial evidence भी जाउछ, okay, जोड़ा कि indirectly support करूची facts in issue, right? तो let's say गोटे कार मर्डर हैला, ठीक अछि, तो सेठी आई विटनेस के नांती माने मर्डर हबार के देखना, ओके, गोटे लाउड बैंग हैला, तो से पाखरे आ गोटे रूम थिला, तो सेठू जणे लोक कि दी जण लोक एटा बाहरी के आसिले, गोटे लोकटे सेठी दौड़ दौड़ जाउथला, ता हाथ रे एटा गन थिला, आउ से गन रु धुआं बाउरथिला, ठीक अछि, बट सेमान देखिना दी से तो गुली मारछ, ओके, सो बहुत जगह रे circumstantial evidence, okay, so it can be circumstantial, माने relevant fact, these can be circumstantial. So heading ta diyuntu, can be circumstantial. Okay, can be circumstantial. Take one line. Often they include circumstantial evidence. Often they include circumstantial evidence that indirectly supports the facts in issue. That indirectly supports the facts in issue. Okay. तापरे next point लिखंतु, जोड़ा हमें already discuss करिथिलु कि they are determined by rules of evidence. Court determine करिवो कि से गोटे fact relevant कि नुह आ ताकू से admit करिवे कि नहीं, ठीक अछि. So subject to judicial scrutiny does not mean that anything and everything जोड़ा आपण आनी देबे fact टा, okay, सेटा court ताकू admit कर देबे, right? Admissibility is one of the most important concepts in any evidence law, सेटा में that we will go when we go to those particular provisions. Okay, so next point लिखंतु, subject to judicial scrutiny. Subject to judicial scrutiny.
इट इज बेटर इफ यू आर मेकिंग नोट्स ताले मो संगे नोट्स बनै दियंतु मु जहा डिक्टेट करछि अदरवाइज आपण जदि परे वीडियो देखि नोट्स बनेबे डबल आपण टाइम टा लॉस हो हां सेमिति आपण बनै परिबे जदि आपण लाइव देखुनांती राइट ताले यू कैन मेक योर नोट्स एट दैट टाइम पॉज द वीडियो एंड यू कैन मेक योर नोट्स ओके बट नोट मेकिंग इज इंपोर्टेंट सेटा आपण को जहा बेले करिया पड़ियो पर्सनल नोट्स परीक्षा बेले बहुत दरकार हेबे ओके प्री कंपाइल्ड नोट्स नो पर्सनल नोट्स so take down the court assesses their relevance and decides on their admissibility जहाँ भी अपन आनदेबे कहबे एटा relevant fact अच्छी बोली does not mean that court will admit them okay the court assesses their relevance and decides on their admissibility okay तापरे नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु ताकर मेन फंक्शन जोड़ा हमें ऑलरेडी डिस्कस करछु से असिस्ट करंती इन्फरेंस रे सो दे प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट ओके नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट they provide context okay take down one line they offer a broader understanding of the circumstances they offer a broader understanding of the circumstances they offer a broader understanding of the circumstances surrounding the facts in issue surrounding the facts in issue surrounding the facts in issue already got a point at the IG just खाली paraphrase करके तको से okay so another point you can add our last point है influence the weight of evidence जदि relevant issues आपनकर okay बहुत strong अछि ताले it certainly increases the weight of the evidence okay so last point influence weight of evidence केते strong की केते weak आपनकर evidence अछि okay so it influences okay the strength of evidence or the weight of evidence so take down relevant facts can affect the weight and credibility weight को underline करिवे credibility की underline करिवे relevant facts can affect the weight and credibility of the evidence related to credibility of the evidence related to the fact in issue okay got it now next asila apanakara तो एटा हमें तार characteristics देखिलु you can just go through it if you have any doubts you can ask then the thing is what will be the difference between these two fact in issue और relevant facts को जदि मु कहबी आपनकर आ भितर difference कोन आसी okay so take down अच्छा एटा लिखिबे केमती एटा भी गोटे जिनस मन रखंतु ए जो डिफरेंस क्वेश्चंस गुडा केमिति अटेम्प्ट करिवे डिफरेंस क्वेश्चंस गुडा केमिति अटेम्प्ट करिवे तो जदी दीटा तार मेथड अछि गोटे तो हला कि जोटा आपण दीटा कॉलम करिके ओके तो मोइटी सपोज ओके फैक्ट्स इन इश्यू आउ रेलेवेंट फैक्ट्स मोइटी 10 टा पॉइंट लिखली 1 2 3 4 5 6 एटा भी के जन भूल भाल कोन करंती कि डायरेक्टली सेंटेंस लिखिबे नाही सेमति नाही प्रथमे को पॉइंट रे डिफरेंस टा होछ सेटा लिखिबार अछि लेट्स से नेचर ओके तो सेटा नंबर 1 नेचर ता अंडर एठी लिखबा आ नेचर है आ नेचर है तापर सेकंड ओके आ जा ऊपर आपण तो एमती जदी करछन देन एही जिंसडा मन रखिबे
खाली लिखिदेले सेमती बेसी आसीबनी मार्क्स सपोज हाई मार्क क्वेश्चन अछि 10 अबव ताले एई मेथड टा यूज करबा टिके यू नो अवॉइड करिवे छोटो मार्क्स में ठीक अछि 12.5 15 ओके 25 तो पाए पड़ेनी डिस्टिंक्शन 15 मैक्सिमम हैला ताहले कोन ना आपण अलगा फॉर्म में करे तो नेचर लिखिबे फर्स्ट पैराग्राफ लिखिबे एफआईआई तापर सेकंड पैराग्राफ रे ऑन द अदर हैंड ओके आरएफ रे ए अछि तो एमती आपण 10-15 टा लिखला रो आपण खाता भी टिके फिल अप हे जिवो 3-4 पेज हे जिवो एटा गोटे पेज रे सब हैला सेटा भी गोटे माइंडसेट अछि आपण कहबे तो क्वांटिटी टा कोन इंपोर्टेंट की से ओजन करके मार्क्स देबे कि अनफॉर्चूनेटली एठी दियंती ठीक अछि तो आपण पूरा टू दी पॉइंट दी पेज लिखिके आसीबे आपण फ्रेंड से जिंस टिके टिके एक्सप्लेन करके लिखिबे किबा बड़ हैंड राइटिंग रे लिखिबे तांकर 5 पेज हे जाय कंटेंट सेम अछि बट आपण दी पेज लिखछंती बिकॉज़ ऑफ योर हैंड राइटिंग एंड टू दी पॉइंट अप्रोच सीए टू दी पॉइंट अप्रोच करछन तांका हैंड राइटिंग बड़ अछि कोन केमती करके से सेम जिंस सब ओके प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके 5 पेजेस लिखि आछन ही विल गेट मोर मार्क्स ओके टिके इलॉजिकल लागुची बट से ही कथा जेते सब आपण यू नो इफ यू जनरली के पब्लिक करंती बट मुझे देखी जी दिस इज द केस इनफैक्ट केते जण बहुत बढ़िया लिखि दांती किंतु कंटेंट कम ही जाय ओके कि सब पॉइंट्स अछि सेतरे किंतु एते कम कंटेंट अछि 25 मार्क क्वेश्चन की 15 मार्क क्वेश्चन पे दी पेज लिखछन किंतु सब पॉइंट्स अछि सेते केस लॉ भी अछि सब जिंस अछि बट स्टिल मार्क्स एते आसीबन 15 रु हार्डली यू विल गेट 7 और 8 ओके whereas जे टिके ताकू पॉइंट्स रे लिखिबो किंतु टिके गोड़ दी लाइन एक्सप्लेन कला आउ ठीक ठाक डायग्राम कर देला ताले ताकू 10-11 भी पळिबो मार्क्स तेमती गोटे गोटे क्वेश्चन रे यदि 3-4 मार्क रो डिफरेंस हबो ताले यू कैन इमेजिन फाइनल मार्क्स रे 30 खंडे डिफरेंस आ जाउछ ओके सो कीप दैट इन माइंड तो एबे जोटा हम डिस्कस करिबा मु आपन को जोड़ा एक्सप्लेनेशन मेथड रे ओके डिफरेंस ता कहूछ तो मु नेचर कहबी आर नेचर कोन ता नेचर कोन सेमती हमें लिखिबा किंतु जदि 5 मार्क क्वेश्चन पड़ला यू हैव टू राइट इन दिस मैनर even if you write in this manner you have to give the heading जो बेसिस रे आपण डिस्टिंक्शन टा करूछली सेटा प्रथमे लिखि कि तापर वन लाइन तार लिखिबे एटा मन रखिबे एटा सेमेस्टर एग्जाम्स में भी से और आपनकर ओजेएस अलगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम्स में भी से ठीक अछि तापरे सो टेक डाउन differences between facts in issue and relevant facts ठीक अछि तो मोटा पॉइंट वाइज कहबी प्लीज टेक डाउन तो फर्स्ट पॉइंट इज क्वाइट ऑब्वियस ओके जदि हमें देखिबा डेफिनेशन रे कोन डिफरेंस अछि सब बेले जेतले दीटा कांसेप्ट को आपण डिस्टिंग्विश करूचंती सब बेले प्रथम पॉइंट ता डेफिनेशन हबो इट माइट नॉट बी द एकेडमिक डेफिनेशन बट वर्किंग डेफिनेशन की फंक्शनल डेफिनेशन हेले भी चलिबो ओके किंतु डेफिनेशन ता प्रथमे जो जदि दीटा टर्म को कंपेयर करा होछ ओके सो फर्स्ट पॉइंट टेक डाउन डेफिनेशन ए पैटर्न रे दी लाइन लिखा हबो एज दीटा पैराग्राफ फर्स्ट लाइन हैला आपण जोटा फर्स्ट वेरिएबल आपण को ए केस रे हमरो ओके एफआईआई फैक्ट्स इन इश्यू सेकंड सेतरे गोटे आपण लिखि परिबो ऑन द अदर हैंड कि सबले ऑन द अदर हैंड न लिखिबी सेकंड पैराग्राफ टा रहइबो ओके दैट इज द रेलेवेंट फैक्ट्स तो देखंतु एटा डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ रे ओके जोड़ा फैक्ट्स इन इश्यू विषय रे लिखिबा सो टेक डाउन एफआईआईस are primary disputed facts underline primary disputed facts underline कर FIIs are primary disputed facts determining the case's outcome okay stop नेक्स्ट पैराग्राफ कि नेक्स्ट लाइन किंतु सेटा हम पैराग्राफ वाइज लिखुछु ताले डिफरेंस क्लियर हो ताको दीटा गोटी लाइन में मिसै दे लिखि देले तारो एते इंपैक्ट पड़िबोनी बुझ पाले तो तेनु सेटा दीटा पैराग्राफ गोटे लाइन हो पछे किंतु गोटे लाइन गोटे पैराग्राफ टाइप रो हो ओके तापर टिके जगह छाडी कि नेक्स्ट लाइन ता अपन लिखिबे ऑन द अदर हैंड relevant facts are secondary facts relevant facts are secondary facts कहीं सेकेंडरी कहला प्राइमरी रो ऑपोजिट टा कहला सेकेंडरी से हिसाब रे
are secondary facts that support or elucidate, underline support or elucidate, that support or elucidate, elucidate, elucidate the facts in issue, FIIs. Okay, it has a first point of difference. Second point of difference, role in proceedings. Court proceedings re facts in issue how relevant facts ro difference kon rochi. So next hela role in proceedings. Second, role in proceedings. So lekhandu etere FIIs are central to the dispute. FIIs are central to the dispute. Next line, RF's relevant facts provide supporting evidence. FIIs are central to the dispute. RF's next line re RF's provide supporting evidence. Hela tangara role kono proceedings re. Tapare are they necessary? Kota necessary. Okay, so ଆପଣଙ୍କର next point ଟା ହେଲା third point ଟା necessity for proof. Necessity for proof. So first line टा लिखंतु FII must be proven for a party to succeed. FII must be proven, underline must be proven. FII must be proven for a party to succeed. Next line, RFs assist in proving or disproving the FIIs. RFs assist in proving or disproving the FIIs. Number 4, determination stage. जोटा हमें पॉइंट्स देखथिलु द फैक्ट इन इश्यूटा आपण केतेबेले डिटरमाइन करछन्ती, रेलेवेंट फैक्ट्स आपण केतेबेले डिटरमाइन करछन्ती. ओके, स्टेज ऑफ डिटरमिनेशन कि डिटरमिनेशन स्टेज आपण दे परिबे. So FIIs are identified during pleadings. Okay, FIIs are identified during pleadings. RFs emerge. RFs emerge throughout the evidence presentation stage. RFs emerge throughout the evidence presentation stage. Evidence presentation stage. Next point, impact on judgment. Impact on judgment. Off no, on. Impact on judgment. Right? So take down. Decisions on FII directly affect the judgment. Decisions on FII directly affect the judgment. Next line. RFs influence the court's understanding. Next line, right? RFs influence the court's understanding and assessment of FIIs. RFs influence the court's understanding and assessment of FIIs. Okay, next point.
आम कही स्पेसिफिक ना केस स्पेसिफिक तो स्पेसिफिसिटी नेक्स्ट specificity FIIs are specific to legal questions posed FIIs are specific to the legal questions posed POSED okay posed next line RFs can be broader तो सेटा legal question posed broader view नहीं कि भी अपना relevant facts आसी परिबो okay RFs can be broader providing context RFs can be broader providing context okay এটা হলা স্পেসিফিসিটি তারপরে নেক্সট আসিলা লিগ্যাল ফোকাস legal focus okay so take down FIIs pertain to establishment of legal rights and obligations FIIs pertain to the establishment of legal rights and obligations next line RFs pertain to the evidentiary support RFs pertain to the evidentiary support of those rights and obligations. RFs pertain to the evidentiary support of those rights and obligations. Okay. तापरे next point लिखंतु admissibility. Admissibility. So facts in issue obviously सेगुड़ा जितने facts in issue अच्छी सेगुड़ा तो okay admissible हबो ही okay but are all relevant facts admissible सेटा तो मु पढ़े ही नहीं but still then okay fact relevant ही पारे but सेटा कोर्ट रे ओके एडमिसिबल हबा पई किछिटा टेस्ट ताकू पास करिया पे पड़िबो किछिटा क्राइटेरिया अछि ओके एमिति दी तीनटा टेस्ट अछि गोटे दीटा हमरो इंग्लिश लॉ रु आछि आ गोटे हमरो इंडियन लॉ रो इनोवेशन माने सुप्रीम कोर्ट सेटा डिसाइड करछन जोटा हमें पढ़िबा जतले हमें एडमिसिबिलिटी की जिबा सो फर्स्ट पॉइंट रे लिखंतु ऑल एफआईआईज आर एडमिसिबल ऑल एफआईआईज आर एडमिसिबल सेटा तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ना दैट इज द ओके प्रिंसिपल फैक्ट तो सेटा दी एडमिट न करा हो ताले द बेसिस और फाउंडेशन ऑफ द केस तो रहिबन तो ऑल एफआईआईज आर एडमिसिबल नेक्स्ट पॉइंट RFs must meet certain criteria to be admissible RFs must meet certain criteria to be admissible साइड रे लिखि दियंतु ओके 3 tests 2 from English law okay one from Indian law माने हमर जोटा इवॉल्व करिछि हमर सुप्रीम कोर्ट जोटा ओके रूल्स गुडा दैछि जनरली हमें सेटा ही पढू ठीक अछि आ बाकी जोटा इंग्लिश लॉ रो सेटा एंती बट सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन रे भी many of the components have been derived from those two tests which are therein which are we have sourced from English law okay so कल लिखि दियंतु साइड रे सेटा एडमिसिबिलिटी पढला बेले हमें डिटेल रे पढिया रहला नेक्स्ट नेचर ओके so first point लिखंतु FIIs are factum probandum okay FIIs are factum probandum that is to be proved the centrality of the case relates to them okay they have to be proved
और जहाँ भी dispute जहाँ भी है facts in issue are factum probandum, that is to be proved. Next line, RFs are factum probans, that is proving. Okay, बुझिपारे तो actually if you see what is the literal meaning of factum probans, this means facts that proves something, that something, okay, is the factum probandum. बुझिपारे so तारो side रे लिखिबे proving fact or fact that proves. It is a proving fact. Okay, last point, judicial evaluation. Last point of difference, judicial evaluation. Judicial evaluation. So FIIs, first point, FIIs are the ultimate facts of the FIIs are the ultimate facts the court decides upon. FIIs are the ultimate facts the court decides upon. Next point, RFs are evaluated. RFs are evaluated to assist in determining. RFs are evaluated to assist in determining to assist in determining to assist in determining the FIIs. Okay, these are some of the difference. Mark देखिके लिखिबार अछि केते मार्क रो पडछि सेति केते डिफरेंस तार संगे रे जदी बेसी मार्क पडिला 15 मार्क हैला ताले मते गोटे गोटे लाइन लिखिया पडियो सब पई आउ एई स्ट्रेटजी रे लिखिया पडियो जदी 2 मार्क 5 मार्क पडला ताले कॉलम रे लिखिबी ओके आउ 10 टा पॉइंट तो केबे भी लिखियोनी 5 मार्क पई 4 पॉइंट 5 पॉइंट जति की मोर सेही टाइम हिसाब रे हैला ठीक अछि 5 मिनिट्स भीतर मु लिखि पाली जति की राइट that is the thing but आपन को जानिबार अछि 10 टा डिफरेंस सो दैट ताटू कम पड़ले कम मार्क रो आपण एडजस्ट करिवे जाडू बेसी इंपोर्टेंट सेटा लिखिबे जोडा यूनिक से गोडा लिखिबे काना आ भीतर केतेटा आपण देखिबे सिमिलर साउंडिंग अछि जोडा काटी देबे थरे गोटे लेखा ठीक अछि डिपेंड्स ऑन केते मार्क रो क्वेश्चन आपण को रोज ओके नाउ वी कम टू द एग्जांपल्स तो मु तार गोटे असाइनमेंट देइथिली ओके आपण को ग्रुप रे दिया हिची व्हाट्सएप ग्रुप रे प्लस जो माने यू नो डायरेक्टली एक्सेस करिया पे चाहउचंती यूट्यूब रो जो माने देखुचंती तो आपण को टेलीग्राम चैनल रे भी दिया हिची तो सेटा एबे एक्सेस करंतु ओके सेटा एक्सेस करले आपण सुविधा हो प्लस मु भी एठी ताको प्रोजेक्ट कर दोची तो हमरो 20 टा सिचुएशंस दिया हिची 20 situations have been given okay and out of say 20 टा सिनेरियोस की सिचुएशंस रे हमको या देखिबार अछि ओके कि से पर्टिकुलर सिचुएशन टा जहाँ से क्वेश्चंस पचारछु हमको सेटा हमरो फैक्ट इन इश्यू की रेलेवेंट फैक्ट एटा गोटे बहुत फंडामेंटल जिंस ठीक अछि प्रथम 5 टा मु कहबी तापरे बाकी 15 टा आपण मते गोटे गोटे करी कहबे ओके so let me just project that first okay is it visible तो एटा जो माने को डाउनलोड करे होता कैन डाउनलोड फ्रॉम टेलीग्राम चैनल और जो माने एडमिटेड स्टूडेंट्स आपण ये रो भी डाउनलोड कर पारी आपण ऐप रे बेटा अपलोड हे जो ओके so let us go to that फर्स्ट सिनेरियो को आसंदो प्रथम 5 टा मु कहि देबी ओके इन ए डिफेमेशन लॉ सूट
the plaintiff alleges that the defendant made a false statement damaging their reputation. Okay, this is what is the scenario. Ebe question kon pacharla apanku? Is the alleged false statement by the defendant factum probandum or factum probans? ठीक है कौन हम एटा गोटे Sir, डिफेमेशन हां कौन ला factum probans habo sir. अदर्स एटा सेंट्रल इश्यू संगे डिफेमेशन लॉ सूट रे कौन हबो कि जने जन को डिफेम करिछ ठीक अछि सो सी एलिगेशन करछि दैट द डिफेंडेंट फॉल्स हां फैक्टम प्रोबंडम हबो सर हाँ किंबा ये अच्छा ये आपण केमती सेटा काई की मु देइची मु एमती काई लेखिनी कि फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स एथि पई काई कि ना आपण से लैटिन टर्म संगे टिके फैमिलियराइज हे जे फैक्टम प्रोबंडम माने हला फैक्ट इन इश्यू फैक्टम प्रोबंस माने हला रेलेवेंट फैक्ट्स बुझ पाले तो सो सब बेले सेटा देखिबे कि जो केस ता हेची तारा सेंट्रल क्वेश्चन ता कोन ओके आ एटा सेंट्रल क्वेश्चन ता की यदि सेटा ताहले दैट इज फैक्ट इन इश्यू ओके और द फैक्टम प्रोबैंडम ताकू जदि सपोर्ट करके किछि अछि ताले सेटा हबो फैक्टम प्रोबैंड सो यस यू आर करेक्ट दैट इज द फैक्टम प्रोबैंडम प्रथमटा ओके तापर सेकंड सिनेरियो को असंतु द प्लेंटिफ रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्डिंग where the defendant is heard making the alleged defamatory statement ठीक अछि एटा से फर्स्ट सिनेरियो रु धरछि ताको से एटा प्रूव करछन कि से मोनारे ऐसा सब बोलतला ठीक अछि सो इन दैट केस व्हाट विल इट बी फैक्टम प्रोबैंडम और फैक्टम प्रोबैंस तो एटा हबो एटा से कोन से एविडेंस दोछि कोन पे एविडेंस दोछि काहे कि ना जो प्रोबंस तो दिस विल बी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्टम प्रोबैंस ठीक अछि थर्ड सिनेरियो को असंतु इन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस ओके तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने कोन ना गोटे दि जण भीतर कॉन्ट्रैक्ट हेतला जणे बोधे तार जा करिया कथा सेटा से करूनी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ओके द प्लेंटिफ asserts that the defendant failed to deliver goods as agreed ठीक अछि तो एई केस रे is the defendant's failure to deliver goods okay that act of the defendant okay he failed to deliver the goods तो एटा कोन हबो फैक्टम प्रोबैंडम हबो और फैक्टम प्रोबांस हबो ओके फैक्टम प्रोबंडम so this will be factum probandum कारण एटा ही तो सेंट्रल एटा प्रिंसिपल फैक्ट ना से जिंसा को से डिलीवर करि परलानी ओके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हला सेति पई राइट सो इट इज फैक्टम प्रोबैंडम 4 नंबर को असंतु the plaintiff provides emails where the defendant acknowledges delay in delivery same question third ro eta continuation okay तो से गोटे किछि प्रूफ देला so are these emails factum probandum or factum probans so obviously एटा आपण प्रूफ करछन कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिची से लिखि जिबी मते कि हां आज दबार थिला से गाडीटा अटकी जाइछ मु देई पारलिनी आज मु आउ गोटे दिन भीतर दउछि मानुछि से कथाटा सो एटा गोटे एविडेंस टू सपोर्ट कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिची okay so this will be what factum probandum or factum probans it will be factum probans okay so rf hobo eta that is okay relevant fact kote hobo ठीक अछि now come to number 5 okay so scenario 5 ta dekhontu in a personal injury lawsuit okay personal injury ro lawsuit the plaintiff claims that they were injured due to the defendant's negligence question is the occurrence of injury factum probandum or factum probans occurrence of the injury is it central फैक्टम प्रोबंडम okay is it the central fact is it the central question yes it is so eta hela apanakara factum probandum next 6 number ta dekhantu medical records detailing the plaintiff's injuries are submitted as evidence so this will be एविडेंस आपण आउरी ताको स्ट्रेंथन करिया पई फैक्टम प्रोबैंडम को प्रूव करिया पई जाबी सेटा आपण ओके ताको एविडेंस ता दउचंती सो दिस विल बी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्टम प्रोबांस ओके सो नंबर 7 को असंतु इन अ थेफ्ट केस द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव दैट द डिफेंडेंट अनलॉफुली took property belonging to another
is the act of unlawfully taking property factum probandum or factum probans. So it will be factum probandum. Probandum. Okay, Factum probans. so right, कौन पाई प्रोबेंडम हैला काहे ना एटा सेंट्रल क्वेश्चन टा ओके सिनेरियो कोन एटा थेफ्ट केस थिला ना तो थेफ्ट केस रे कोनटा प्रूव हबो सेंट्रल क्वेश्चन कोन से जिंसडा नै छि कि नै चोरी छि कि नै ओके सो से पचाउछि से जो चोरेबर एक्ट टा इज द एक्ट ऑफ अनलॉफुली टेकिंग प्रॉपर्टी फैक्टम प्रोबेंडम जदि सेकंड तापर से कहला तो सीसीटीवी फुटेज किछि ओटे अछि नंबर 8 रे सर्वेलेंस फुटेज शोज द डिफेंडेंट ओके taking the property from victim's premises so ita factum probans relevant fact hola eta proof karuchi apananकर fact in issue ku okay factum probandum ku proof karuchi so it is okay your factum probans or relevant fact 9 number को आसंतु in a fraud case तो fraud case रे कोन आपनको सेटा proof करे पड़िबो okay किए किछ ओटे fraud करिछि right the prosecution alleges that defendant intentionally deceived the victim for financial gain जानी सुनी की से डिसीव कला विक्टिम को इज द इंटेंशनल डिसेप्शन फॉर फाइनेंशियल गेन्स फैक्टम प्रोबैंडम और फैक्टम प्रोबान सेटा तो सेंट्रल क्वेश्चन ना दैट यू हैव टू प्रूव ओके दैट इंटेंशनली से जानी सुनी की निजर लाभ पई ओके विक्टिम को से ताको डिफ्रॉड करिछि ओके सो इट इज फैक्टम प्रोबैंडम इट इज अ सेंट्रल क्वेश्चन इट इज द प्रिंसिपल फैक्ट व्हिच हैज टू बी प्रूव तापरे क्वेश्चन नंबर 10 को आसंतो financial records reveal unauthorized transactions benefiting the defendant okay so a jo financial records uda what will these be so okay eta probans of proof uda uda dekhochi ki ha se defraud karchanti right tapare come to number 11 the scenario kono in a property dispute so property dispute the plaintiff claims ownership of a piece of land so se taku proof kare pade se land ta moro is the claim of ownership factum probandum or factum probans so it will be probandum okay it a fact in issue roibo taku proof kare padibo ki mu hi owner okay more the title of the land mo pakare achi buch pale so ownership of land seta hala primary fact in this case so it will be probandum or fact in issue 12 ta dekhontu the plaintiff presents a deed showing their purchase of land so this is to prove that he is the okay so eta he is the owner of the land tar ownership को prove करछि ए जो तार deed ta okay so eta probans habo next come to scenario 13 in a negligence case the plaintiff alleges that defendant's action caused their injury is the defendant's alleged negligent action factum probandum or factum probans so eta probandum habo okay can negligence case अपन को proof करे रहती कि से तारो negligent action पे जहाँ भी damages होला कि जाएला okay और तारो next part ता witnesses testify that defendant was texting while driving at time of the accident हैला तो से defendant जे से तोरे चले लाले से तारो you know ध्यान नथला से तारो text SMS की WhatsApp जहाँ से करतला ठीक अछि तो एटा ओटे again it's a proof okay to prove the factum probandum तो एटा factum probans हबो ठीक अछि number 14 ta come to number 15 in a forgery case okay the prosecution must prove that defendants falsified a signature false signature purchasing is the act of falsifying a signature factum probandum or factum probans so factum probandum haba eta au tara associated question number 16 handwriting expert testify that signature does not match the known sample of purported okay signer so eta proof diya okay so this will be probans right now come to 17 in a product liability case ta mane kono na kichi gote you know product te gote consumer kinthila tari upare kichi issue heichi okay in a product liability case the plaintiff claims that defective product caused their injury is the defectiveness of the product factum probandum or factum probans so factum probandum hobo kana sie to se hi claim korchi na right that eta defective product boli okay more injury se through hela तो सी ताकू प्रूफ कर सेंट्रल और द प्रिंसिपल फैक्ट ओके एयर होची की
से प्रोडक्ट ही तार इंजुरी कॉज करिछि से ताको सेटा प्रूव करे पड़ियो दैट इज फैक्टम प्रोबेंडम ओके 18 टा देखंतु द प्लेंटिफ प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम ए सेफ्टी इंस्पेक्टर डिटेलिंग द प्रोडक्ट्स डिफेक्ट तो एटा प्रूफ है ना Proven. okay so this will be factum probans or the relevant fact question 19 को आसंतु in an arson case okay जो माने पूरा नुआ जस्ट पढुचंदी arson माने कोन निया लगेबा एबे अपन देखछन बहुत जगह रे के कोडी गाड़ी की निया लगे दोची के फायर फॉरेस्ट फायर स्टार्ट कर दोचंदी यू नो व्हाट हैपेंड इन कैलिफोर्निया एते बड़ डिस्ट्रिक्ट एते वेल्दी डिस्ट्रिक्ट थिला एबे ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ओके तो सेठी जो बड़ बड़ सब हॉलीवुड स्टार्स माने भी घर भर किनतिले ओके से सब छाटुडी पड़ले कना सब जली गला सेटा राइट एमती बहुत फॉरेस्ट फायर आर्सन माने जानी सुनी की प्रॉपर्टी रे निया लगाइबा ओके से गछ होइताउ का घर होइताउ का गाड़ी होइताउ ताको आर्सन को जाय इन एन आर्सन केस द प्रोसिक्यूशन alleges that the defendant intentionally set fire to a building is the act of setting fire factum probandum or factum probans so seta jetu Probandum. central okay question ta ei case ro central fact which needs to be proved principal fact which needs to be proved it is your factum probandum okay now last जोटा आपनकर scenario 20 accelerant residue is found on defendant's clothing एटा कोन accelerant Proven. कोन ओके accelerant माने से नियाटा लगेला केमती कोन डीएसएल टा पकै देला निया लग गला से पेट्रोल यूज करथिबो कोन गोटे से यूज करथिबो जोडा निया धरिबो दैट इज कॉल्ड accelerant accelerant कोन acceleration रो आछि वर्ड टा माने गोटे जिंस को आउरी जल्दी करे देबो सेटा स्पीड बढ़े देबो तो आपण यदि पेट्रोल पकै की नियाटा लगे देबे ठीक है तो संगे संगे जलिबो सेटा तो सेटा हला accelerant जीए पकैबो ओके जहाँ भी से पूरा ग्लोव्स पिंधि की भी पकाउ पछे किछि पार्ट्स ता ऊपर भी पड़िबो ताकू रेसिड्यू कहते एक्सीडेंट रेसिड्यू इज फाउंड ऑन डिफेंडेंट्स क्लॉथिंग माने से डिफेंडेंट जीए ता क्लॉथ रे से पेट्रोल रो कि जहाँ भी एक्सीडेंट थिला तारो रेसिड्यू मिलिछि दैट मींस ओके इट इज ए प्रूफ राइट तो फैक्टम प्रोबेंस हो सेमती आपण देखुचंती गन पाउडर रेसिड्यू आगु को जेतेले हमें सब केस लॉस पड़िबा ओके ए जो स्पेशली मर्डर थ्रू गन शॉट ओके गुली मार दो बकू तो से जो गुली मार थिबो त इमीडिएट कोन गोटे टेस्ट हुए जोटी फोरेंसिक टीम पहुंचे आउ विक्टिम को इवन 24 आवर्स हो 48 आवर्स हो परे ताकू जदी नै कि तार हाथ हरिका आउ तार क्लॉथ्स हरिका सेगुडा केमिकल एनालिसिस हुए काहे कि ना आपण जेते जा जेमती पिनि जानतु से जहा भी हेले देयर विल बी जो बर्स्ट हबो ओके जो गुलीटा फायर हैला जहा भी हेले आपनकर गन पाउडर रेसिड्यू आपन ऊपर पड़िबो ही पड़िबो तो किछटा केमिकल टेस्ट करी जाना पड़ी परिबो कि सेटा ता ऊपर पड़छि कि नहीं ओके जदी क्लीन अछि जेमति कि सुइसाइड रे ठीक अछि बहुत जगह अपन देखथिबे लोकर डेड बॉडी मिलिबो पाखरे गोटे गन थिबो गन रे हाथ आंगुडी पछथिबो बट स्टिल देन पुलिस फाइंड्स आउट दैट एटा हेची कोन एटा मर्डर हेची ताकू के मारी दी तापर ता हाथ रे पिस्टल टा रखी देछि गन टा रखि देछि केमिति से जानछन से जदी निजो को मारी थांता सेही एंगल रे ता ऊपर ए जो गन पाउडर रेसिड्यू जहाँ भी हेले पड़िबो ठीक अछि ऑब्वियसली निजो को मारला पर से तो ही इज यू नो ही इज नॉट देयर तो से सफा तो निजे करिबन ना किंतु जेतोले से माने ताकू टेस्ट करंती किछि न थाए दैट मींस से गुलिटा सीए चले बुझि परले एंती गुडे जिंस जोटा कि हम एटले क्रिमिनल लॉ बीएनएस करिका डिटेल्स रे पढिबा लॉट ऑफ केस लॉस यू विल सी एबे जो नुवा नुवा फोरेंसिक एविडेंस ऊपर केस लॉ जुडा आसुची दैट आल्सो मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड ठीक अछि बुझि परले तो एटा गोटे बेसिक कांसेप्ट थिला okay that's why I took one full class on this concept ठीक अछि any doubts in this No, sir. okay so आमे गोटे जा तो वीकली टेस्ट करिका जा होती that is a different matter but हमर गोटे open test आमे करिबा ठीक अछि on this Sunday okay I'll give you the syllabus मु जा आज वेडनेसडे हला मु फ्राइडे पर्यंत जा पढेबी ता भीतर पढियो तो काली आमे प्रिजम्पशंस देखिबा ठीक अछि very very important what are presumptions what are the types of presumptions okay तापरे को प्रिजम्पशन को आपण रिबट कर परिबे को प्रिजम्पशन रिबट हे परिबन ए सब जिंस हम टिके देखिबा इन टुमारोस क्लास okay so we'll stop here then Thank you, namaskar sir. Thank you, sir. thank you Thank you, sir.